Good evening, everyone. How are you guys today? I hope you can hear and see me clearly, everybody. Good evening. Thank you for waiting for me. Yeah, audible. All right. So we did part 1 of figures of speech. This is part 2, and I'm going to be introducing you to some uncommon ones. So, I wouldn't call them uncommon. For you, they may be uncommon figures of speech, but एग्जाम में वो आ सकते हैं, तो उस तरीके से ये अनकॉमन नहीं है. If you have not seen part 1 of figures of speech yet, make sure you revisit that class. एक बार फिर से देख लेना part 1 को, और जो बेसिक्स हमने figures of speech किए थे, like simile, metaphor, personification, oxymoron, वो सारे कॉमन वाले थे. तो आई होप आपने वो सारे देख लिया होगा, उसका प्रैक्टिस भी किया होगा. ठीक है, अपनी ग्रामर बुक से किया होगा, अपने टॉपिक टेस्ट से किया होगा. We're going to dwell deeper into the trickier ones, something that's not very widely seen. And if you're sitting for your 12th, it's a win-win for you because it's going to be a part of your course as well. All right. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Okay. तो start करते हैं with the agenda of the session. क्या करेंगे आज? Common figures of speech करेंगे. Common मेरे लिए शायद आप लोगों के लिए ना हो, और कुछ examples देखेंगे. ठीक है? We'll go slow. अच्छा, मुझे जल्दी से एक बार recap करवाओ. Part 1 में हमने कौन-कौन से figures of speech cover up किए थे? Let me write them down here. We did simile, we did metaphor, we did personification, and what else did we do? Oxymoron, and I think I have a list of that. और क्या किया था हमने? बताइए जल्दी जल्दी. फिर हमने किया था simile, metaphor, personification, irony, and euphemism. Yes, we did alliteration, irony, and euphemism and alliteration. Exactly. Hyperbole, fun किया था, yes, and hyperbole भी किया था. All right. So we did all of these figures of speech. ये ना सबसे common वाले हैं. ये आपको very likely almost हर basic क्लास में, हर बेसिक बुक में मिल जाएंगे. ओके, ये आपके लिए ये वो सेट है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना. ये प्रायोरिटी पे करना है आपको. ठीक है. नाउ लेट्स गेट dwell deeper into the other kinds of figures of speech. एक बार जल्दी से क्विक रिविजन करते हैं. figures of speech क्या होते हैं? figures of speech डायरेक्टली बात को ना बोलना, घुमा फिरा के बोलना, saying it indirectly to make it catchy, to make it attractive, any piece of writing. That is the usage of figures of speech. You can make a piece of writing attractive in various ways, and the ways are the figures of speech. So let's start off with our first figure of speech in today's class, metonymy. The root word here is NYM. NYM means name. Okay, so metonymy refers to a name, but a name that is given to something that is closely associated with something else. जैसे अगर आपने एक नया नाम दे दिया उसी से क्लोजली रिलेटेड दूसरी चीज को, वो हो जाता है मेटोनिमी. इसी चैनल पे सेव्ड है, लास्ट वीक किया था, लास्ट टू लास्ट वीक. ठीक है. सो एग्जाम्पल देखिए, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. स्वॉर्ड से हम वॉर करेंगे, पेन से हम लिखेंगे. तो क्या पेन यहाँ एक्चुअली पेन की पावर को डिनोट कर रहा है या राइटिंग की पावर को? पेन इज अ सेपरेट वर्ड used to denote something that is closely associated with it. Similarly, sword also is a different word to substitute a closely associated word. Understood? So, pen is mightier than the sword does not mean the physical power of a pen compared to the physical power of a sword. Pen here relates to a closely associated word, that's writing, and sword with warfare. Similarly, I can say hands for assistance. I need more hands for this task. Does not mean मुझे और हाथ चाहिए. I don't want to become
a goddess with 10 hands. It means I need more people helping me with the work. Tongue, mind your tongue. That means mind your language. Obviously, tongue is a closely associated word to language. Hand से ही task होगा तो assistance उसी से related है. Remember, these are closely associated words. Okay? So, remember, बस ये चीज आपको याद रखना जरूरी है. Nim is a name. ये root word यहाँ याद रखना. Now, let me introduce you to a similar Milton. ठीक है. So, let me introduce you to a similar figure of speech जहां लोग confuse हो जाते हैं metonymy के साथ में. ठीक है. That is synecdoche. एक तो इस word का pronunciation बहुत सारे लोग गलत करते हैं. दोषी नहीं होता. It's synecdoche. Okay. Synecdoche is also a word, a new word. But this new word will be used to represent a whole group. Let's see how. ये एक bigger bunch को represent करेगा. Not like collective nouns. In a different way. Let's take some examples. Head count for the next week's party. Head count is the total number of people present. Head is a slightly associated word with it. है ना? तो इसलिए लोग synecdoche को metonymy के साथ confuse करते हैं. The only difference between metonymy and synecdoche is synecdoche एक bigger group को represent करता है. तो एक छोटा word bigger group को represent करेगा या एक बड़ा word एक छोटे group को represent करेगा, vice versa एक group को representation होगा. ठीक है? Yes, Manu, correct. So, to differentiate between synecdoche and metonymy, remember, metonymy doesn't have to represent a group, synecdoche has to. I'm looking forward to breaking bread with you. When I break bread with you, that means I'm going to eat an entire meal with you. अब bread उसी में associated word है food के साथ. एक overall word है, आप जो कुछ भी खाओगे उन सबके लिए. हमने bread एक common term दे दिया. So एक common term एक collection of things के लिए जो कि associated है. So breaking bread, head count, all of these. All right. So, okay, Gauri. ठीक है. Understood everyone the difference between synecdoche and metonymy? Now let's move to our next figure of speech, everyone. अच्छा, एक बात याद रखना. I'm teaching you these unusual figures of speech. मैं बहुत detail में नहीं जा रही हूँ. देखो, figures of speech की list endless होती है. There's an entire dictionary on figures of speech if you want to learn more. But I'll be teaching you only till the moment I think it's enough for you to know. So I think most of the figures of speech have been covered up or will be covered up in today's class or the previous class. And if you need to know something else, you can watch the class that happens in your batch and the asynchronous video. I think the list is absolutely enough for that. You don't have to delve deeper and do an entire dictionary of figures of speech to be a master of that. बहुत common figures of speech आते हैं, basic understanding उनकी बहुत जरूरी है. All right? Is my voice breaking? I don't think so. No, it's absolutely fine. Glitch है audio में? रुको मुझे देखने दो बेटा एक बार. I feel it's fine. I think it's absolutely fine. Can you please confirm if everything is good? हाँ, audible है, ठीक है. So what I was saying was the list. आपको ना डिक्शनरी नहीं पढ़नी है पूरी फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए. Only हाँ, ठीक है. Only the list that I've shared in the part 1 and part 2 class, the list that has been given out to you in the class that has happened in your batch and the asynchronous video. That is absolutely enough for you. You don't have to do anything else beyond that. पूरी डिक्शनरी नहीं पढ़नी है आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए. जो आएगा उसी में से आएगा. All right? Next word. Let's move ahead. So we have done synecdoche and metonymy.
But before I move ahead, if you still haven't enrolled yourself into our batches, you have a 3-day free trial that you can opt for. And you can attend a number of classes, take a number of tests, access everything that a child registered with our program can for 3 days, of course, only. Make sure you do that right away. Don't wait. Otherwise, the offer would end very, very soon. Apostrophe. Look at the sentence. Oh, time, thou relentless master of fate. ऐसा लग रहा ना मैं टाइम से बात कर रही हूँ. Oh, Romeo, wherefore art thou Romeo? मैं ढूंढ रही हूँ रोमियो को, बट ऐसा लग रहा है ना मैं रोमियो से बात कर रही हूँ. रोमियो है नहीं सामने मेरे. टाइम है नहीं सामने मेरे. When you talk in a manner as if the person is right in front of you. Oh, moon, चंदा मामा, twinkle twinkle little star. ऐसे लगता है कि आप बात कर रहे हो. वो आपके सामने है, but सामने है नहीं. Apostrophe is a figure of speech where the speaker is talking in a manner as if the person or the object is right in front of you, but in reality, he or it is not. Oh God, help me. Yeah. Oh God, where are you? Sania? Yes, it is. Okay. So all the rhymes जिसमें हम चंदा मामा, twinkle twinkle, ये सारे जितने भी हम सैंटा क्लॉज के लिए जितने भी राइम्स गाते हैं, ये सारे हम ऐसे बात करते हैं कि वो हमारे सामने ही है. वो सारे अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है. अच्छा, रिमेंबर, फिगर्स ऑफ स्पीच में अपॉस्ट्रोफी का मीनिंग दूसरा है, बट ग्रामर में अपॉस्ट्रोफी इज दिस, लाइक अल्पाज क्लास, है ना. सो अल्पा की क्लास, ये अपॉस्ट्रोफी हो गया इन ग्रामर, बट फिगर ऑफ स्पीच में अपॉस्ट्रोफी इज टॉकिंग इन अ मैनर कि वो बिल्कुल आपके सामने. ओ विंड, यस, एब्सोल्युटली. That also is an example of figure of speech apostrophe. चलो next figure of speech में चलते हैं. Ready everyone? Antithesis. If you remember in the last class, we did some set of opposites. Irony, ठीक है? Oxymoron. We did these. And irony और oxymoron में भी हमने opposites किया था. And in the last very class, I told you that there are a lot of other figures of speech जहां opposites आते हैं. जैसे एंटीथीसिस, एंटी क्लाइमैक्स, बहुत सारे ऑपोजिट्स आते हैं, लेकिन इनके यूजेज अलग अलग होते हैं. आयरनी में टू ऑपोजिट सिचुएशंस होती हैं. समथिंग दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड हैपेंड, दैट्स आयरनी. ऑक्सीमोरॉन में टू ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स आते हैं एडजेसेंट टू ईच अदर. रिमेंबर दैट एवरीवन? या नहीं? यश, ये तो पर्सोनिफिकेशन हो गया बच्चे, है ना. So we have a few more figures of speech today, 2 more, जहां मैं आपको opposites बताऊंगी. पहला करते हैं हम एंटीथीसिस, और फिर क्लास के एंड में मुझे याद दिलाना, मुझे आपको एंटी क्लाइमैक्स भी बताना है, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है. सो लेट्स डू एंटीथीसिस. एंटीथीसिस में यू हैव टू opposing ideas, opposing words नहीं, opposing ideas. देखो, speech is silver, silence is gold. You have two opposite ideas and वो opposite ideas adjacent नहीं होंगे, दो अलग अलग clauses में होंगे. दोनों clauses बिल्कुल parallel होंगे according to the rules of parallelism. Is silver is gold. Two is human is divine. You see, ये जो दोनों क्लॉजेज हैं ये इंडिपेंडेंट हैं और ऑपोजिट आइडियाज टू ईच अदर दे रहे हैं, और इन दोनों के स्ट्रक्चर पैरेलल हैं. प्रिटी अगली इज एन ऑक्सीमोरॉन. यश, है ना. सो इन अ नटशेल, इन एंटीथीसिस, एंटी मीन्स opposite. You have opposite ideas in two independent clauses, and both the independent clauses will be close to each other, but the opposite words, opposite ideas will not be adjacent to each other, and both the clauses will be parallel in their grammatical structure. Absolutely correct, Gauri. United we stand, divided we fall. That is an example of antithesis. Understood everyone?
So we've done 3 set of opposites in figures of speech: irony, antithesis, oxymoron. We're left with 2 more: paradox and anticlimax. Okay, let's move ahead with the next one. But before that, we have a free workshop happening on 8th of October, 11 a.m. by Abhimanyu sir, where Abhimanyu sir is going to be talking about why you should choose CLAT as a career option. Are you suitable for CLAT as a career? Is this career option the right fit for you? All of these questions will be answered. It's a very interactive live workshop. So if you have any doubts about CLAT preparation, specifically if you're targeting CLAT 2025, make sure you don't miss out on this workshop. Just remember, you need to register yourself beforehand for the workshop. Register kar lena. The details will be shared by my video team. Alternatively, it will be there under my video in the description box. Attend kar lena isko yaad se. ठीक है everyone? चलो आगे चलते हैं. Let's do the next figure of speech. Let me have a sip of water. Paradox. कौन मुझे बताएगा डिफरेंस पैराडॉक्स और आयरनी में? क्लास में पढ़ा होगा, आई एम श्योर. बताओ. पैराडॉक्स और आयरनी में डिफरेंस. I'll wait for your answers. What is the difference between paradox and irony? आयरनी में जो एक्सपेक्टेशन था उससे उल्टा हो गया. पैराडॉक्स में भी वही होता है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे उल्टा हो गया, है ना. पैराडॉक्स में एक रिजॉल्व होता है, एक रीजन होता है. यस, आप जस्टिफाई कर सकते हो ये पैराडॉक्स क्यों एग्जिस्ट कर रहा है. आयरनी में रीजन नहीं होता. ठीक है. Yes, exactly, Ramesh. Everyone's correct. I'll repeat. In irony, what you expected did not happen. The opposite rather did. Okay? And there's no reason ऐसा क्यों हुआ. But in paradox, you have a valid reasoning as to why these contradictory, these opposite situations can exist together. So paradox में you have opposite situations. Okay? Like irony. Also for these opposite situations, you have a reason why these opposite situations exist together. You can justify a paradox. Yes, you could say that. Paradox is logically an absurd statement, while irony focuses on certain contrast between appearance and reality. Absolutely correct, Manu. Absolutely correct. Now let's see the beginning of the end. You see, beginning and end are two contrasting words here. One, they're not placed adjacent to each other. This is merely a small example. Usually paradox will have a bigger example, a longer one for you. Like in the CR questions, you see paradoxes. I'm sure you must have solved them, right? कि शहर में तो सीनियर सिटीजन रहते हैं, बट बच्चों के कपड़ों का बिजनेस बढ़ रहा है. कैसे हो सकता है ये? यहाँ तो पेस्टिसाइड बैन है, बट लोगों को पेस्टिसाइड से इन्फेक्शन हो रहा है. कैसे हो सकता है ये? When you justify कैसे हो सकता है, you resolve a paradox. The beginning of the end हो सकता है. Two opposites हैं. But can I see the beginning of the end? Yes, I can. I can see the beginning of the end of dictatorship. I can see the beginning of the end of the dominance of one country over the other. I can do that. I can see that. Reason hai na? That's how you resolve a paradox. All right? So, paradox will usually have a logical reasoning there. The beginning of the end is a simpler example. In exam, you might find lengthier ones. Did everyone understand paradox, everyone? Just send me a yes. Also, yet you haven't hit the like button yet. I have 21 people live and barely 10 likes. Go ahead and do that. Thank you if you've done that already. Okay. Assonance. ये एक फिगर ऑफ स्पीच जो साउंड की बात करता है, जैसे alliteration, rhyming scheme. ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच भी साउंड की बात करता है. Alliteration में क्या होता है? इनिशियल लेटर रिपीट होता है, लाइक शी,
सेल्स, सी, भैया तो स्पेलिंग में भी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, शेल्स, तो ये एस 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 इनिशियल साउंड रिपीट हो रहा है, ये हो गया एलिटरेशन, ठीक है। देन वी हैव राइमिंग स्कीम, विल यू ईट दिस, just a minute, will you eat this on a train, otherwise everything would go down the drain, train drain, rhyming scheme, okay. Then we have assonance, assonance में vowel sound repeat होता है, exactly, you wrote faster than I did, Sanya. Yes, exactly. So assonance में you have repetition of vowel sound, like यहाँ क्या vowel sound repeat हो रहा है, ai, rain, Spain, plane. The repetition is of AI sound. Okay. So assonance is, and then we have consonants, repetition of consonant sounds. Assonance vowel sound का repetition हो गया, consonants consonant sound का repetition हो गया. Onomatopoeia भी है, बिल्कुल वो भी sounds को represent करता है ना, वर्ड्स जो अपने साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक साउंड से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच है, बिल्कुल करेक्ट यश. हाँ, एसोनेंस भी. अच्छा, कई लोग ना एसोनेंस को राइमिंग स्कीम से कंफ्यूज कर देते हैं. राइमिंग स्कीम यूजुअली ना राइम्स में ही होती है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन. ये जो सम, आई विल नॉट टेक नेम्स, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड अभी लेटेस्ट सिंगर्स आ गए हैं ना, जो जो ऐसे राइम बना देते हैं, पहली लाइन सिमिलर टू सेकंड लाइन, सिमिलर टू थर्ड लाइन. गेस कर सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, राइम बना दिया पूरा. ओह या, यू गॉट दैट माय चाइल्ड, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, है ना. तो ये तो राइमिंग स्कीम हो गया, जो पोएम में रेपिटेशन ऑफ साउंड होता है, यूजुअली लास्ट वर्ड के साउंड का रेपिटेशन. ऑल राइट, सो yes, ding dong is an example of onomatopoeia. So let's move ahead. Assonance is done, everyone. All right, but before I move ahead, we have a scholarship test happening on 1st of October. क्या 1st of October कब है? नहीं, 2nd of October पे क्वेश्चन था ना. क्या किया था 2nd of October पे? कहाँ गए थे? गांधी जयंती पे. So आपको उसके पहले यहीं पे भी जाओ, गांधी जयंती पे 1st of October पे स्कॉलरशिप टेस्ट देके जाना. 11 AM को है, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, मिस नहीं करना इसको, ठीक है एवरीवन, ठीक है, इसको मिस मत करना. So I shall see you and in the test, and I hope you're going to win thousands of scholarships here. ठीक है. काला काला कुर्ता पजामा, what is that? चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay. No, I think I'm done with that. We were left with one of it, and that was antithesis. चलो ऐसा करती हूँ, आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है. आपको मुझे एंटीथीसिस का एक एग्जाम्पल मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है. एंटीथीसिस, अच्छा एंटीथीसिस तो हो चुका है, एंटी क्लाइमैक्स, सॉरी, एंटी क्लाइमैक्स का एक एग्जाम्पल. आपको अपने आप सर्च करना एंटी क्लाइमैक्स कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है. और एंटी क्लाइमैक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक एग्जाम्पल देके बताएंगे. आई चेक इफ योर एंटी क्लाइमैक्स एग्जाम्पल इज करेक्ट और नॉट. कॉपी पेस्ट करने की जगह थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, खुद गूगल करने की कर लेना, बट आई विल बी हैप्पियर इफ यू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन. एंटी क्लाइमैक्स होमवर्क है आपका, ठीक है. ऑल्सो इफ यू स्टिल हैवंट enrolled yourself for a program, we have a test series that's coming out for a very nominal cost. You have 25 CLAT, 15 ALET and 15 other law entrance type tests. जल्दी से टेस्ट ले लो, रजिस्टर कर लो. ये नंबर है, जितने टेस्ट लोगे उतना अच्छा मौका होगा ना आपके लिए अच्छा स्कोर करने का. And we've launched 2 batches, one for 2024 and another for 2025. जो भी टारगेट ईयर है आपका, अकॉर्डिंगली जल्दी से एक बार बैचेस में रजिस्टर करके आ जाओ. टाइम बहुत कम है आपके पास, ये आपको पता ही है. एंड अभी भी नहीं दिया तो 2 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, अब दे दो ऑल इंडिया ओपन मॉक. बैंगलोर वाले बच्चे तो आज दे सकते हैं, बैंगलोर बंद है, कल सैटरडे है, वैसे ही छुट्टी है, और 2 अक्टूबर को भी होना चाहिए था टेक्निकली क्योंकि छुट्टी थी, बट उसके पहले दे दो आप, ठीक है. अभी नहीं, कमेंट सेक्शन में आफ्टर द वीडियो एंड्स, ठीक है, नॉट राइट नाउ इन द चैट. ऑल राइट एवरीवन, so ending the class on this note, but
Do you know we're coming out with our most popular revision class, and that's our non-stop 6-hour marathon, 30th September. ऐसा करो, आज ही दे दो मॉक, क्योंकि 30th सितंबर को तो तुम मॉक दे नहीं पाओगे, क्योंकि 6 आवर्स में आप ड्रेन हो जाओगे. मॉक नहीं दिया तो आज दे दो, टाइम है आपके पास. नहीं तो फिर संडे तक डिले करोगे तो भूल जाओगे, स्कोर अच्छा नहीं आएगा, एंड देन यू विल ब्लेम योरसेल्फ. योर डेट विद अस 30th September 11 AM onwards. मिस मत करना. बहुत बहुत बहुत, यू विल कम वाइजर आफ्टर दिस 6-hour run that you would do with us. बिल्कुल मिस नहीं करना, ओके? And follow us on all social media handles, everyone. Instagram, Facebook, Telegram, subscribe to our YouTube channel, our app on Google Play. All the links are there under my video in the description box. Thank you so much, everyone. See you in the class very, very soon.